Hello everyone. So today we are here to discuss UPSC Medical Science 2022 question paper. All in all, question paper was a mixed bag. कुछ questions fairly simple and direct थे, कुछ questions indirect questions थे, कुछ questions थे जो कि syllabus में completely नहीं थे, जो कि उन question को थोड़ा सा difficult बनाता था. However, अगर हम अपनी questions की choices को थोड़ा सोच समझ के questions को attempt करें तो we can score गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन पेपर. अब हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं. नाउ कमिंग टू पेपर 2 क्वेश्चन 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द इमेजिंग मोडालिटीज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीजेस. लिस्ट देयर स्पेसिफिक इंडिकेशंस इन डायग्नोसिंग कार्डियक इलनेसेस. So the imaging modalities used in the diagnosis of cardiac diseases are echocardiogram, cardiac CT, coronary angiogram and cardiac MRI. So echocardiogram uses ultrasound waves to produce images of the heart chambers, valves and blood vessels. Doppler echo can also be used to measure the flow of blood through different heart chambers. It is used in the detection of left ventricular hypertrophy, detection of the features of diastolic function and assessment of the valvular lesions. Cardiac CT creates different images at different locations in the heart. Coronary angiogram, it is done by inserting thin tube through an artery and it is used to locate any blockage in the blood vessel. Cardiac MRI, it is useful in the patients with hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and infiltrative cardiomyopathies. So indications क्या हो सकते हैं इनके? For screening of heart conditions, to detect any problem early, to diagnose the heart condition, to determine any heart attack and the extent of the damage, to find the cause of symptoms like chest pain and the shortness of breath, and to monitor the heart to evaluate whether the treatments are working or not. Second questions पे अगर हम आते हैं तो outline the pharmacological and non-pharmacological management of anxiety disorder. Fairly simple and direct question था. Pharmacological management and non-pharmacological management में आप क्या बोलेंगे, जैसे साइकोथेरेपी और रिलैक्सेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा. मैंने अपनी बुक में भी इसको आंसर को डिटेल में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. A 3-year-old girl who weighs 12 kg presents with a history of loose stools mixed with blood and mucus and fever for 3 days. On examination, she is active and feeling excessively thirsty. There is some loss of skin turgor. So different parts of this question are: first, write your complete diagnosis, name the most common microorganisms responsible for this condition, write 2 most important life-threatening complication and outline the management of the condition of this girl. तो fairly simple question है. Bacillary dysentery and diarrhea को cover कर रहे हैं हम. अगर हम पार्ट A, B, C are fairly direct question. अगर हम उसको बोलें कि life threatening complications of this condition को अगर हम analyze करें तो life threatening complications are due to severe fluid losses and due to organisms which causes bacillary dysentery and diarrhea. So severely low potassium levels हो सकते हैं dysentery में which can cause life threatening heartbeat changes. Seizures हो सकते हैं patient को organism की वजह से hemolytic uremic syndrome भी हो सकता है. Other complications क्या हो सकती हैं? For example toxic megacolon, rectal prolapse, etc. Coming to the next question. Give 2 examples of each of the following types of vaccine used in the children. First, capsular polysaccharide vaccine. Second, conjugate vaccine. Third, recombinant vaccine. तो वैक्सीनेशन जो है हमारा सिंपल एक डायरेक्ट टॉपिक है. हाउएवर इस बार इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया है. इन्होंने वैक्सीन को उनके मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है rather than asking for a type of vaccine, its uses and its side effect. तो अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. तो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन के एग्जांपल्स हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. Conjugate vaccine can include Haemophilus influenza, conjugate vaccine B, HIB, pneumococcal conjugate vaccine, and then recombinant vaccines होती हैं जो कि components होती हैं proteins, peptides, DNA से बनी हुई, and can include Hep B vaccine and BCG vaccine. Next question उन्होंने पूछा है define the following herd immunity and vaccine efficacy. तो herd immunity जैसे हम कोविड में पढ़ रहे हैं, herd immunity is very common, an important topic nowadays. So herd immunity is the level of resistance of a particular group or community to a particular disease. So it is dependent upon a stable composition and a stable population structure. Next, coming to vaccine efficacy. So vaccine efficacy is the degree to which a vaccine prevents the disease. Efficacy is measured by
comparing a vaccinated group with a placebo group. If a vaccine has a high efficacy, a very few people in the group who receive the vaccine would get sick than the people in the group who receive the placebo. For example, if a vaccine with a proven efficacy of 80% means that out of the people in the clinical trial, those who received the vaccine were at 80% lower risk of developing disease than the group who received the placebo. Next question is, state the various modes of transmission of scabies. So fairly direct question है, मेरे टॉपिक स्केबीज मेरी बुक में उसमें भी मिल जाएगा आपको. सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द माइट बर्डन इन क्लासिकल केस ऑफ स्केबीज ड्यूरिंग एन इनिशियल इन्फेक्शन, अ री इन्फेक्शन एंड अ नॉर्वेजियन स्केबीज. सो इनिशियल इन्फेक्शन में स्केबीज माइट्स बरो इनटू द डीप लेयर ऑफ एपिडर्मिस where the adult female lays eggs. The eggs hatch in 3-4 days and develop into adult mites in 1 to 2 weeks. After 4 to 6 weeks, the patient develops an allergic reaction to the presence of mite proteins and feces in the scabies burrow, causing intense itches and rashes. Most individuals are infected with 10 to 15 mites. So initial infection is of 10 to 15 mites. Reinfection may, which usually occurs because of incomplete and improper treatment, but the mite burden is comparatively lesser than an initial infection. अब नॉर्वेजियन स्केबीज में इम्यूनोसप्रेस इंडिविजुअल्स में होता है, फॉर एग्जांपल इन पीपल विद HIV एड्स. सो इट डेवलप्स एन अनकॉमन मैनिफेस्टेशन विच इज़ कॉल्ड एज क्रस्टेड ऑफ नॉर्वेजियन स्केबीज. सो इसमें जो डिजीज बर्डन होता है, इट रेंजेस फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ माइट्स प्रोड्यूसिंग वाइड स्प्रेड स्केल एंड क्रस्ट, ऑफन विदाउट significant itching. This condition has a high mortality if untreated due to secondary sepsis. Coming to the next question, discuss in brief etiology, clinical features, diagnosis and treatment of nephrotic syndrome in a 40-year-old adult male. So nephrotic syndrome, although हमारे syllabus में directly नहीं पूछा हुआ, however अगर हम इसको देखें तो यूरिनरी सिस्टम में UTI, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज हमें पूछा हुआ है. बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेवरदलेस एक ऑब्वियस टॉपिक बन जाता है. अगर आप इस टॉपिक को आपने पढ़ा है तो आप यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ईजिली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2-year-old unimmunized boy weighing 6 kg presented with fever, cough, difficulty in breathing for 5 days. There was a history of fever with maculopapular rash for 3 days, around 7 days prior to this episode. The child is febrile, has a pulse rate of 116 per minute, respiratory rate of 72 per minute, SpO2 is 88%. There is severe chest indrawing and nasal flaring. Auscultation revealed bronchial breath sounds on left side and bilateral crepitation. State the complete diagnosis, enumerate 3 most important complications, how would you assess the severity of this illness and discuss in brief the management of this child. तो fairly simple question है, measles with severe pneumonia की बात हो रही है. आपको ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल जाएगा और मेरी बुक में भी है इन द टॉपिक IMNCI. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 C पार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया 5th क्वेश्चन तक. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड से. सो क्वेश्चन नंबर 2C का है, व्हाट आर द 4 P's used to describe clinical manifestations of lichen planus. Then what are the most common sites of cutaneous involvement of lichen planus. So lichen planus is also a fairly simple direct question. Then describe Koebner's phenomena, list the diseases where this phenomena is observed. Again Koebner's phenomena is also a fairly direct question, आपको मिल जाएगा, ये मेरी बुक में भी मैंने मेंशन किया हुआ है. Now coming to question number 3. So question number 2, first question nephrotic syndrome, second question is related to pediatrics and third question is related to dermatology. It is a fairly doable question. नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगेन पीडियाट्रिक्स क्वेश्चन, मीजल्स विद सीवियर निमोनिया भी बहुत डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है. और डर्मेटोलॉजी वाला भी लाइकन प्लेनस एंड कॉबनस फिनोमेना भी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दीज टॉपिक्स, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द डाइट एंड एक्सरसाइज रिलेटेड एडवाइस given to an old male diagnosed with non-insulin dependent diabetes mellitus. Second, write the acute complications of insulin dependent diabetes mellitus and their management. So इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के बारे में इन्होंने पूछ लिया है. डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन इज़ फेयरली सिंपल एंड डायरेक्ट. अबाउट द डाइट एंड एक्सरसाइजेस भी आप अपनी कॉमन अवेयरनेस और अपनी बुक से लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल
Diabetes mellitus में we have to limit certain foods like starchy vegetables, potatoes, corns, carrots, green peas. जो vegetables high in carbohydrates हैं वो blood sugar भी बहुत जल्दी बढ़ाते हैं large amounts में, तो उनको we have to restrict. Secondly, fried foods and those foods which are rich in saturated fatty acids like butter, french fries, etc. they should also be limited. Thirdly, foods which are rich in high salt content और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वो भी हमें लिमिट करनी है. प्रोसेस्ड फूड्स लाइक कुकीज़, पोटैटो चिप्स भी लिमिट करने हैं. ठीक है. हेल्दी फूड्स कौन से हो सकते हैं आप? हेल्दी फूड्स लाइक ऑलिव ऑयल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स. अगेन प्रोटीन रिच फूड्स लाइक ब्लैक बीन्स, black eyed peas, protein. This you can advise a patient with insulin dependent, non-insulin dependent diabetes mellitus. अगेन अगर आप इसको बोलें कि डाइट के बारे में हो गया, देन वी हैव एक्सरसाइज रिलेटेड एडवाइसेस आल्सो. तो टू ऐड फिजिकल एक्टिविटी in his or her daily routine should be the advice given. Focus should be on aerobic exercises and physical training. So physical activity से क्या होता है? It lowers your blood sugar levels and can keep your extra burn calories so that your weight is managed. If you are not used to physical exercises, then you can start slowly and then work your way up. So exercises आपको aerobic exercises बतानी थी, stretching, strength trainings, etc. walking. Then next question related to insulin dependent diabetes mellitus. So fairly direct question है. Acute complications IDDM की क्या होती है? As we know, that is diabetic ketoacidosis. So this I have discussed in my book also. Now next question is third B. A 22-year-old primary mother comes to you with complaint of not expressing milk. Due to this, her baby remains hungry and is constantly biting at her nipples. She is feeling soreness in the nipples. First, how will you assess the mother-child duo to identify the underlying etiology of not enough milk? Discuss briefly. Second, outline the 4 criteria each for correct positioning and correct attachment of the baby for proper breastfeeding. And third, discuss in brief the management of sore nipples. So now, first part, problem of enough milk. So problem of enough milk is not always a problem. It is almost always a non-problem. It is partly iatrogenic and partly due to ignorance of normal breastfeeding. So underlying problem not enough milk में क्या हो सकती है? Not proper feeding due to improper positioning and attachment during breastfeeding, not feeding on demand, lack of frequent breastfeeding, lack of bonding between mother and the baby. So we have to encourage the new mother and motivate her for breastfeeding. For a woman who desires to breastfeed, recourse to bottle feeding is almost never necessary. For the few babies who fail to thrive on breast milk, supplementation may be given with a lactation aid. Therefore, the problem of not enough milk is very less in those mothers who put their babies to their breastfeeding immediately after delivery. Possibly the emotional bonding that occurs during the first few hours gives a mother motivation that she needs to persist with breastfeeding when it becomes difficult. The next questions like proper positioning and correct attachment are fairly direct questions. And management of sore nipples. So management of sore nipples में आप क्या बोल सकते हैं? We have to ensure that proper positioning and attachment of the baby while breastfeeding. Then we have to prevent thrust. Thrust is a yeast infection of the nipples. The oral thrush can pass between mother and the baby during breastfeeding. Topical antifungals may be used like miconazole, clotrimazole, nystatin, etc. Gentian violet for oral thrush is also given in primary healthcare settings. So third ka C part. Next question is, following an acute episode of diarrhea, a 3-month-old infant wearing diaper develops diaper rash on skin surfaces that are in direct contact with the diaper. So what is your diagnosis? Describe the clinical picture of this disorder and how do you treat skin condition of this child? So again, this question is not directly in our syllabus, indirect question है. However, आप इसमें अगर आपने डर्मेटोलॉजी पढ़ी है आपने ठीक से, then you can try attempting this question. डाइपर रैश और डाइपर डर्मेटाइटिस रिलेटेड वाले सिम्टम्स होंगे इसमें. सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी स्किन इरप्शन इन द डाइपर एरिया इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स. रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फ्रिक्शन, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, वेरिंग पीएच. Second can be constant contact with urine and feces, both of which are highly irritant to the skin. Third can be the 3 most common types of diaper dermatitis include chafing dermatitis, irritant contact dermatitis, and diaper candidiasis. Fourth, Staphylococcus aureus is thought to have a predominant role in diaper dermatitis. So management क्या होगा dermatitis का? Clean the area with warm water and mild soap.
immediately remove the irritants and soiled diaper. And third, topical treatment which can consist of antimicrobials and low potency steroids. So अगर हम क्वेश्चन 3 को एनालाइज करें विच इज़ अ चॉइस क्वेश्चन फॉर अस, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 की कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस. Exercise related diabetes mellitus 2 can also be written. Breastfeeding, positioning or attachment, sore nipple is also a direct question. But there were some indirect questions also. For example, diabetes mellitus 2 की exercise and diet related आपको जो advices लिखनी है, problem of not enough milk, then diaper rash and diaper dermatitis. तो अगर question 3 को हम all in all analyze करें तो it is a mixed questions having some direct questions as well as some indirect questions. Coming to question number 4, a 25-year-old female has presented to the medicine OPD with complaint of excessive tiredness, cold intolerance and menstrual irregularities. First, write the name of thyroid disorder that can lead to above manifestation. Tabulate the differentiating cardiovascular clinical manifestations in hypothyroidism and hyperthyroidism. Third, outline the pharmacological management of hypo and hyperthyroidism. What are the blood investigations conducted to monitor the treatment of hypo and hyperthyroidism? Again, a fairly direct question. थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में है, हाइपो एज वेल एज हाइपर. बहुत ही डिटेल में इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ है. क्लिनिकल फीचर्स, एटियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एंड हाइपो. तो आपने अगर अच्छे से तैयार किया होगा ये टॉपिक तो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन ईजिली. फोर्थ का बी पार्ट है, अ 6 week old sick looking infant is brought to a primary health center with suspicion of possible bacterial infection as per IMNCI. So first, how will you assess this child and classify as having possible serious bacterial infection or local bacterial infection? Second, state the treatment for possible serious bacterial infection and local bacterial infection as per the IMNCI strategy. So again, topic IMNCI का ही डिस्कस हो रहा है इस पे. I would say a difficult question, however, can be attempted. पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमेशा हर साल कुछ ना कुछ IMNCI वाला आता ही है. अगेन जो इसमें क्वेश्चन है पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, दिस यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट एज पर द IMNCI गाइडलाइंस. इसका नेक्स्ट पार्ट है, अ यंग एपिलेप्टिक पेशेंट वॉज पुट ऑन एंटी सीजर ड्रग lamotrigine. 3 weeks later he develops an eruption consisting of purpuric macules and bullae all over the body with involvement of lips, oral mucous membrane and eyes. The skin was tender to touch. He is asking now what is the differential diagnosis in this case and how will you manage this condition. So Stevens-Johnson syndrome है, fairly direct question है. Differential diagnosis आप क्या बताएंगे इसमें? Differential diagnosis आप बता सकते हैं इसमें Stevens-Johnson syndrome की, toxic epidermal necrolysis versus Stevens-Johnson syndrome, ठीक है, and management of the condition is fairly direct question. So analyzing question number 3 और question number 4, तो question number 4 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो question number 4 में आपको हाइपर हाइपो का डायरेक्ट क्वेश्चन है. IMNCI का भी क्वेश्चन मोर और लेस डायरेक्ट क्वेश्चन है. एपिलेप्टिक पेशेंट Stevens-Johnson syndrome इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. सो अगर इन तीनों क्वेश्चंस को यू कैन राइट डाउन, देन द चांसेस ऑफ फैचिंग मोर मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 4 vis-a-vis कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आउट ऑफ द सिलेबस थे. सो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन नंबर 2 was also fairly direct question. Question number 3 was little bit of difficult question, indirect question, and question number 4 was also a direct question. Now coming to section B. Section B में again compulsory question था. So name the clinical test for checking the saphenofemoral junction competency and deep venous system patency. Enumerate the complications of varicose veins. So varicose veins is a direct question and a fairly ignored topic. So it has become important. जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो varicose veins का मेरी बुक का ये क्वेश्चन पार्ट है, तो 14, 15, 16, 17, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. अगेन फिर 19, 20, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. So therefore it becomes an important question. Third question था, discuss briefly the management of venous ulcer. Again it is a fairly direct question. Fifth का A part हो गया. Fifth का B part था, a 65-year-old male come to the casualty with acute retention of urine. He also gives history of nocturia, urine urgency, dribbling and thin stream of urine for 2 years. How will you manage acute retention of urine in this patient?
and briefly describe the definitive management in this patient. Differential diagnosis of urinary retention is a fairly direct question. Retention of urine is also an important topic, so you can attempt it. Part C था outline the management of a 35-year-old multigravida patient who has presented to the emergency department in the state of shock. She has delivered a dead baby at home 2 hours back and the placenta has not been delivered yet. She has a previous history of LSCS. So outline the management of a 35-year-old multigravida patient who has presented to the emergency department in state of shock. So management you can see from the complications of third stage of labor की management. Then retained placenta है तो retained placenta का आपको management बताना है. Again I would say a fairly direct question. Retained placenta और placenta accreta का management क्या है? Controlled cord traction in case of separated placenta, while manual removal is done in a placenta which can be separable. However, placenta accreta में management क्या है? Hysterectomy. So coming to the D part, enumerate the contraindications which limit the usage of OCPs in women. Again fairly simple question है, direct questions है, contraindications of OCPs पूछ रहे हैं. Second इसका part था causes of failure of sterilization procedure in male and female. So causes of failure of sterilization procedure पूछ रहा है. Little bit difficult question है. Female sterilization कैसे procedures से होती है? Mini laparotomy, laparoscopic tubal ligation, tubectomy while performing lower segment cesarean section. So causes of failure in female sterilization क्या हो सकते हैं? Improper procedure like tubal ligation not performed on either right side or the left side, band placed at the right mesosalpinx or the left mesosalpinx. Then tubal peritoneal fistula हो सकता है, spontaneous recanalization हो सकती है, spontaneous tubal reapproximation associated with tubal reanastomosis. So female sterilization failure एक well known and proven entity है. It is not completely preventable. Failure due to improper procedure can be avoided if we will follow the standard guidelines. Proper counseling of the patient regarding chances of failure and early reporting if menses are delayed can help in diagnosing failure in early gestation and to reduce related morbidities. Male sterilization का failure. So male sterilization is performed by vasectomy, which is a surgical procedure to cut or seal the vas deferens. Failure क्या हो सकता है? Failure to use contraceptives for at least 8 to 12 weeks after the operation because sperm will still be there in the tubes. Then up to 2 semen tests are done after the operation to make sure that all the sperms have gone. Spontaneous recanalization can also occur. Part E था state the national guidelines on feeding of infant and young child. What are the goals which these guidelines strive to achieve? So again थोड़ा सा difficult question है. As per the national guidelines on young and infant child feeding practices, infants should be exclusively breastfed for the first 6 months of the life to achieve optimal growth, development and health, and thereafter to meet their evolving nutritional requirements. The infants should receive nutritionally adequate and safe complementary foods while breastfeeding continues for up to 2 years of age or beyond. Infant milk substitute or infant food should only be used if recommended on health grounds. The objectives of national guidelines on IYCF are to bring about improvements in the optimal feeding practices for infants and young children and raising awareness for achieving optimal feeding practices. Following steps have been taken by the government to ensure infant and young child feeding practices, that is infant milk substitutes, feeding bottles, infant foods have been enacted. Infant Food Act as amended in 2003 has been enacted in the country to promote, protect and support breastfeeding and ensuring proper usage of infant foods. आंगनवाड़ी services में counseling is provided to pregnant women and lactating mothers. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है centrally sponsored conditional maternity benefit scheme for pregnant and lactating women, जिसमें cash incentives are provided for the mother, pregnant woman and the lactating mother. Then there is Poshan Abhiyan which focuses on social and behavioral change communication. Then home-based newborn care and care provided by the ASHA workers. Then village health, sanitation and nutrition days. Then revised mother and child protection card is also there. So national guidelines जो हैं एक fairly indirect question है, direct question नहीं है. Although जो government guidelines हैं वो आपको थोड़ा सा aware रहना चाहिए उनके बारे में. So this is the compilation there. So this compulsory question in section B was little bit difficult अगर हम इसको analyze करें तो.
सो जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, सेफोनोफेमरल जंक्शन इनकॉम्पिटेंसी एंड वैरिकोज वेन्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. देन acute retention of urine was also a direct question. Then management of complications of third stage of labor, retained placenta and postpartum hemorrhage was also a fairly amount of direct questions, although can be little bit of difficult question. Then contraindications of OCP, a direct question. Causes of failure of sterilization procedure in males and females, difficult question. And the national guidelines on feeding for infant and young children are also a difficult question. So 2-3 questions since compulsory question में ही difficult questions पूछे गए. Although you have to attempt these questions, आप छोड़ नहीं सकते हैं इनको, तो attempt करिए, जितना आता है उतना लिखिए. Then coming to optional question. So optional question number 6, first part, define preeclampsia, enumerate the risk factors which may lead to this condition. What are the clinical signs and what are its alarming symptoms, and outline in brief its management. So preeclampsia के risk factors, definition, clinical signs and alarming symptoms और management पूछ रहा है. Again fairly direct question है. आप मेरे बुक में भी टॉपिक है hypertensive disorders of emergent pregnancy, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं. सेकेंड था describe the clinical features, diagnosis and management of ileocecal tuberculosis. Again a fairly direct question. मेरी बुक में टॉपिक टीबी इंटेस्टाइन में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है. देन कमिंग टू द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन एपिडेमिक, एंड सेकेंड पार्ट, ब्रीफली स्टेट द वेरियस स्टेप्स यू वुड टेक व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एन एपिडेमिक. अगेन अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन. मेरी बुक में भी मैंने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज क्लासिफिकेशन एंड एपिडेमिक में इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 6 वॉज अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन. प्रीएक्लैम्सिया पूछा, टीबी इंटेस्टाइन पूछा और इन्वेस्टिगेटिंग एन एपिडेमिक एंड द वेरियस स्टेप्स टू टेक while investigating an epidemic. So considering the COVID-19 pandemic, an epidemic related questions was expected. So this question number 6 आप इसको attempt कर सकते थे. Question number 7 का first part, a 40-year-old lady came to the casualty with pain in the right upper abdomen associated with vomiting for 5 days. On examination, she was found to be having tenderness in the right hypochondrium. The rest of the abdomen was normal. USG revealed a thick wall gallbladder with gallstones and pericholecystitic fluid. Then, what is the clinical diagnosis and how will you manage this condition? Enumerate the complications of gallbladder. And what is Mirizi syndrome? How will you investigate and manage it? Gallstone disease में इसको मैंने explain किया हुआ है. Mirizi syndrome, again a difficult question. So Mirizi syndrome is defined as common hepatic duct obstruction caused by extrinsic compression from an impacted stone in the cystic duct or infundibulum of the gallbladder. Patients with Mirizi syndrome can present with jaundice, fever and right upper quadrant pain. Mirizi syndrome is often not recognized pre-op in patients undergoing cholecystectomy and therefore can lead to significant morbidity and biliary injury, particularly with laparoscopic surgery. Investigation and management कैसे करेंगे? Liver function test, CA19 markers are elevated. Ultrasound में आपको contracted gallbladder दिखेगा with either thick walls or extremely thin walls with gallstone impacted in the infundibulum. Computed tomography में आपको gallbladder thickness और bile duct की dilatation देखनी है. MRCP कराएंगे to demonstrate the extrinsic compression of the gallbladder, of the bile duct, and to determine whether the fistula is present or not. सो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए अगर हम इसको एनालाइज करें तो गॉलस्टोन डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉलस्टोन डिजीज़ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन. सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन हम क्या बोल सकते हैं? इनसाइड द गॉल ब्लैडर हो सकती है, बाइल डक्ट में हो सकती है या इंटेस्टाइन में हो सकती है. देन मिरिजी सिंड्रोम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है. वी हैव टू कीप इन माइंड, अगर हम कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं देन वी हैव टू प्रिपेयर अ टॉपिक थॉरली. देयर आर चांसेस कि उस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है जो कि आपके सिलेबस में ना हो, जैसे ये क्वेश्चन था. गॉलस्टोन एक उनका फेवरेट टॉपिक रहा ही है. हमेशा ऑल्टरनेटिव ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है. या तो गॉलस्टोन कोलिक पूछेंगे या सर्जिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पूछेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन पूछेंगे, एट्सेट्रा. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
So what is the total iron content of iron in the human body? Then what are the body functions of iron? And then state the interventions being undertaken under the Anemia Mukt Bharat strategy. So न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में मैंने इसको डिस्कस किया है. टोटल कंटेंट ऑफ आयरन, बॉडी फंक्शंस एंड इंटरवेंशंस बीन टेकन. सो टोटल कंटेंट ऑफ आयरन अगर हम देखें तो अराउंड 4 ग्राम्स ऑफ आयरन इज देयर. मेल्स में 4 ग्राम्स एंड फीमेल्स में अबाउट 3.5 ग्राम्स. Children will have around 3 grams or less. So this 3 to 4 grams is distributed throughout the body in the form of hemoglobin, muscles, bone marrow, blood proteins, enzymes, ferritin, hemosiderin and transport in the plasma. Body functions of iron क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट फंक्शंस हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के लिए. अदरवाइज फंक्शंस हो सकते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है एंड फंक्शंस ऑफ द मसल में हेल्प करता है. सो स्टेट द इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर द अनीमिया मुक्त भारत. ये एक डायग्राम है फॉर द अनीमिया मुक्त भारत जो कि मैंने अपने बुक में भी रेफर किया है. क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट था, व्हाट इज द करंट कंसेंसस ऑन प्रिस्क्राइबिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी a fairly direct question है. I have also discussed this in my book. So who needs HRT? Symptomatic women suffering from estrogen deficiency, high risk cases like women with CVDs, stroke, Alzheimer's, premature menopause, for example women who have undergone hysterectomy, gonadal dysgenesis, etc. Merits and demerits क्या हो सकते हैं? Merits आपने बता दिए. Demerits हो सकते हैं vaginal bleeding हो सकती है. There are increased chances of thromboembolism, breast cancer, endometrial cancer, etc. So analyzing question number 7. So question number 7 अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो था गॉल ब्लैडर वाला, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे बट मिर्जी सिंड्रोम, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन्स, देन आयरन, उसके बॉडी फंक्शंस, इंटरवेंशन अंडर द अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. So question number 7 I would say is a difficult question as compared to question number 6, where question number 6 is a fairly direct question. Question number 7 is a difficult question to attempt. Question number 7 में आपको प्री-एक्लैम्सिया, आपको टीबी इंटेस्टाइन, एपिडेमिक और ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है. वाइल क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिर्जी सिंड्रोम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी है, देन देर इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. सो इट्स अ fairly difficult question as compared to question number 6. Then now we come to question number 8. So question number 8 है, NTB strategy is an evolution over the previous strategy to win over TB. What are the key principles of NTB strategy? What are the pillars and component of this strategy? And what are the major barriers that have thwarted this progress in the battle against the disease? सो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑन टीबी एलिमिनेशन में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है. कमिंग टू द बैरियर्स दैट हैव थ्वाटेड द बैटल अगेंस्ट द डिजीज, द प्राइवेट सेक्टर हैज़ नॉट बीन इफेक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी. मोस्ट ऑफ द NGOs आर फेसिंग लैक ऑफ फंडिंग विच हैव वीकन्ड देयर कैपेसिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंड, राइट्स बेस्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए. देयरफॉर वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच फॉर टीबी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. Implementation challenges रहे हैं, for example lack of proper infrastructure and manpower. Our TB program is heavily dependent upon the primary healthcare settings. So unless हमारा primary healthcare improve नहीं होगा तब तक वो problem जो है TB की and the problem of malnutrition would not be addressed. This program of TB elimination would have implementation failure. Coming to the second part of this question, what have been the impact of HPV vaccination in India and discuss the currently available HPV vaccine and their schedules. So ये मैंने अपनी बुक सर्वाइकल कार्सिनोमा टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है. इम्पैक्ट ऑफ HPV वैक्सीनेशन क्या रहा है? द HPV वैक्सीनेशन इज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस. कंप्लायंस विद सर्वाइकल पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज however low in India. The currently available vaccines are safe and efficacious. The vaccine should be administered to all the females who can afford the vaccine because protection is seen only when the vaccine is given before the infection with HPV. Therefore, the vaccine should be given prior to the sexual debut. Vaccines are not 100% protective against cervical cancer and they are not a replacement for periodic screening.
Therefore, screening programs should continue as per recommendations. Both the vaccines are equally efficacious and safe for protection against cervical cancer and precancer lesions as of currently available data. So 8 का C part, a 60-year-old lady comes to the surgery OPD with 6 into 4 centimeter lump in her right breast with nipple discharge. What will be the possible findings on clinical examination if this lump were malignant? How will you investigate this patient? What are the important structures which are to be preserved during modified radical mastectomy? Again, a fairly direct questions in breast carcinoma में. So अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी एनालाइज करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कैन ऑल्सो बी अटेम्प्टेड. टीवी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, फेयरली इग्नोर रहा है, देयरफॉर becomes important. HPV vaccination भी it's a fairly direct question and breast cancer is also a fairly direct question. So given in section B में आपका question number 5 which is a compulsory question number 5 में there were direct questions as well as indirect questions. However ये questions आपको attempt करने ही हैं in order to fetch marks. Coming to optional questions, question number 6 was a direct question, question number 7 was a difficult question and indirect question, and question number again 8 was a direct question. So तभी that is why I was telling you कि attempting the optional question becomes a strategy to prepare at the time of examination hall. So तीनों questions को आप अच्छे से पढ़िए, आप देखिए कि आपको तीनों questions में से कौन सा question सबसे अच्छे से आता है और उसके सारे सब पार्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं. Then start attempting the question. आपका एम ये होना चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स आते हों रादर देन आपको क्वेश्चन का एक सब पार्ट अच्छे से आता हो और आपके दो सब पार्ट्स आपको ठीक से नहीं आता हो. सो वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी टू फेच मैक्सिमम मार्क्स रहनी चाहिए रादर देन टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन जिससे आप फेयरली वेल वर्स्ड हैं, आपको उससे उस क्वेश्चन या उस टॉपिक पे इंटरेस्ट रहा है या आपका वो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, एट्सेट्रा.